Hello everyone, my name is Aarti and you're watching HW News. Imagine yourself in a situation where you are in a foreign country, in some remote corner you may have never visited. It is minus 5 degrees Celsius temperature, snow everywhere. You have hardly few packets of food and some liters of water, and you are not able to move from where you are for the last 3 days. Be it day or night, there is no loo, no roof on your head. All you have is your 2 bags of clothes and a jacket to keep you warm and some supplies which can run out in a few hours. Accha, there is no guarantee that you can get food or water again if you run out of it. Isn't this horrific? This is not a description of any reality show. This is the reality hundreds and thousands of Indian students stuck in Ukraine are living. They are making desperate calls to authorities back in India to save them. Until almost a week ago, they were medical students with dreams and ambitions studying in a foreign country. Today, their only hope is to get out of the country torn due to war alive. Here is what PM Modi said about the evacuation effort though, not in an official presser but in election rally. इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। It has been 5 days since the war started between Russia and Ukraine. There have been reports of Russia targeting residential areas in Ukraine. Bombings and shellings are going on for the past 5 days. Sirens are going off. Cities were put under lockdown. Some had to take shelter in bunkers, where some had to take shelter in underground metro stations. Those who finally managed to reach the border had to face horrific conditions, harsh weather, hunger, fear, and if this was not enough, some Indian students were allegedly tortured, racially discriminated, and they were also thrashed by Ukrainian soldiers. This is what they had to face. Watch these videos. इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं, बॉर्डर्स पे
इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस. सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस. दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर. द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं. इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है. आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे. मेरा नाम गरिमा मिश्रा है. मैं यूपी लखनऊ से हूँ. हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है. हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है. सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा. हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं. जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं. क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता. यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन. लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले. कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए. पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है. सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं. उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है. तो प्लीज आप कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था. ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा. शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो. प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं. बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है. सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत. प्लीज आप हमारी हेल्प करो. प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो. Put yourself in the shoes of these kids, these students, stranded in some foreign country and now fighting for their life, fighting to get to safety. And while this was happening in Ukraine, while SOS calls were being made by these students, when they were being thrashed and harassed, where was our dear Prime Minister? He was campaigning for elections, addressing rallies in Uttar Pradesh, asking kids to make real videos like Kili Paul and Nima in Man Ki Baat. There are close to 18,000 students stranded in Ukraine. Since Saturday, India has evacuated close to 1,000 students. They landed in Delhi and Mumbai, and you know what the government did? They pat their own back for this extraordinary achievement. Here is how. Here is what Piyush Goyal and Jyotiraditya Scindia said. Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji,
The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी टीमों को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. They've been wonderful. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है, और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। पर आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं, और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। Two ministers in the Modi government personally met and spoke with the students who were evacuated. Air India's second evacuation flight from the Romanian capital of Bucharest landed at the Delhi airport in the early hours of Sunday, carrying 250 students. And here is what India wrote on Twitter for it. Joyous homecoming. Relieved and delighted to see 250 Indians safely return from Ukraine on the Air India flight at the Delhi airport. Received and interacted with them along with my colleague Shri V. Muralidharan ji. Welcome back, #Operation Ganga. This is what Piyush Goyal said to students who arrived in Mumbai. On the other hand, hundreds of students who are stuck are calling for help. They are crying and pleading to them. They are saying there is no communication with them, officials are not responding to them. It has been an old habit of the government to amplify even the smallest of the tasks done as some kind of a big achievement. While I appreciate that the Indian government has finally taken it upon itself to evacuate these stranded students, the question remains, why couldn't we anticipate it a week back? Why were arrangements not done anticipating this situation? When it was necessary to have all the hands on the deck, the ministers of the cabinet were busy campaigning in Uttar Pradesh. On the other hand, the Apada Mein Avsar, that is opportunity and calamity culture, does not stop even in this situation. The crisis and the horrific conditions of Indian students are used again and again in campaign rallies and speeches. What should be said in official press conferences as an address to the nation and as a relief to the parents who are worried is being said in rallies. Although after multiple reports of students being harassed, the government today has decided to send 4 ministers, Jyotiraditya Scindia, Hardeep Singh Puri, General V.K. Singh and Kiran Rijiju, to 4 neighboring countries of Ukraine for the evacuation. This decision was taken in a high-level meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi. Well, we sincerely hope that these ministers in other countries, in neighboring countries of Ukraine, will finally smoothen the process of Indian students' evacuation and get them back home safely. Do let us know what you think about this in the comment box below. For more news and updates, you can log on to www.hwnews.in.